Class 9. Today watched some important and basic concept of chapter 2 polynomial. So watch the full video without skipping. So listen student, I mentioned here the polynomial of the one term. Polynomial of the one term is called the monomial, and polynomial of the two terms is binomial. Polynomial of three terms trinomial. One term means only x or 2x. So it is the monomial. Two terms. Suppose we are writing 3x square plus x. So this is a binomial. Three terms is the trinomial. Now see student, when one algebraic expression can be polynomial, see example 3x square, 3x x plus 1, and suppose 1 is 3 root x plus x minus 1. Among these two, see x to the power 2, it is a whole number. Here x to the power 1 by 2 square root, so it is not a whole number, so this is not a polynomial. So one algebraic expression can be polynomial if and only if the exponent, the power of the variable, whole number. Now let us understand by one more example. Suppose it is 2 upon x minus x plus 1. See, 2 upon x means, in another form we can write 2x to the power minus 1 minus x plus 1. So here x to the power minus 1 is not a whole number, it is an integer. So this is also not a polynomial. So what is the essential condition? Exponent of the variable should whole number. Like this is polynomial. See one more example of the polynomial. You don't be confused. Suppose I am writing this root 3x minus 1. So this is also polynomial because this root is only on the constant, not on the variable. Root 20x square minus x. This is polynomial. This is also polynomial because this root is on the constant, not on the variable. See, in this case, it is root on the variable. So this x will become x to the power become 1 by 2. So this is not a polynomial. Now come to the next page. Polynomial of degree 1. Listen student, of degree 1 means x plus 1. This is the degree 1. X to the power, the highest power of x is 1. So it is linear polynomial. Polynomial of degree 2 is quadratic polynomial, cubic polynomial with degree 3. So these are the example of cubic polynomial. Now what about the constant polynomial? You try to understand student, what is the meaning of constant polynomial? Now come to the next page student. I filtered here the important concept in this portion. A0 equal to an equal to a1, a2, a3 and so on equal to an. Showing with your example. See, suppose 2x square minus 3x. If this constant 2 equal to 3, 0. So here will be 0. So we will get the 0 polynomial. Simple concept in any algebraic expression. If constant with the variable all equal to 0, then whole will be 0. Then it is called the 0 polynomial. What about like a constant? Just now we saw this is a constant. The degree of constant polynomial is 0. What about the degree of 0 polynomial? Degree of 0 polynomial we can't define here, because whatever we put here, so it will always 0. So we can't define here. The degree of 0 polynomial cannot be defined. So here it is mentioned, the degree of 0 polynomial is not defined. So this is the answer, zeros of polynomial. So first of all, let us see the value of polynomial at given value of x. Suppose 2x square minus x plus 1 is a polynomial. If I put here x is equal to 1, so we will write in general form the px is equal to px, we denote 2x square minus x plus 1. So we put x is equal to 1 here. So in place of x we will write p1. So it is 2
1 square minus 1 plus 1. So it will be 2, minus 1 plus 1 cancel, answer will be 2. So this is the value. Now let us see with a very simple example. Px, we denote algebraic expression polynomial by Px, 2x plus 3. If you put here x is equal to minus 3 upon 2. So in place of x, minus 3 upon 2 is equal to 2 into minus 3 upon 2 plus 3. 2 cancel, minus 3 plus 3, it is 0. So it becomes 0 by putting x is equal to minus 3 by 2. In general, we can say Px is equal to x minus a. So by keeping in place of x a, it becomes 0 because a minus a 0. So pa will be the 0 of this Px. And what about the important concept here? We got here the every real number. See, it can be any number. The 0 can be any number, 0 of the polynomial. Not necessary it's 0. It can be 1, minus 1, root 2, root 3. So means the simple and important concept, listen here. Every real number is a 0 of, what is the 0 of constant polynomial? Again come to the constant polynomial. Constant means 5, 7, 9, any constant. What about the 0 of constant polynomial? It has no 0 because no variable is here. We can assume x to the power 0. We can assume here y to the power 0, z to the power 0, imaginary variable. So we can't put here the value of x here. So it is not possible to make the 0 of constant polynomial. So the answer is there is no 0 of the constant polynomial. And what about the 0 of 0 polynomial? Any real number. See, 0 polynomial. So means whatever we put here, minus 1, 0. You can put here root 2. So means all number can be 0. Any real number. In general, we will say that any real number can be the 0 of 0 polynomial. And 0 of constant polynomial, not possible. Now see, 0 of polynomial, how can we find directly? Suppose the question is 7x minus 4. What is the 0 of polynomial? Suppose the question is that. For this one, we will put the whole polynomial is equal to 0 and we will find out x is equal to 4 upon 7. So this is the 0 of polynomial. You can check and verify here. 7, 4 by 7 minus 4. So it becomes 4 minus 4, 0. So 4 by 7 is a 0 of this polynomial. In general, ax plus b is a polynomial. So what is the 0 of this polynomial? X is equal to minus b upon a is a 0 of this polynomial. Cubic polynomial has 3 zeros. Quadratic polynomial has 2 zeros. Linear polynomial has 1 zero. Now see the very important thing. Suppose I am writing x cube minus 1. If I put x is equal to 1, it becomes 0. No, it is 1 minus 1. It is 0. So it means there is a 1 0. But here it is a cubic polynomial. So what does it mean? It means we have to write in proper way. The cubic polynomial has, listen the very important concept student, the cubic polynomial has at least 3 zeros. एक 0 हो सकता है. Quadratic polynomial at least 2 zeros. Number of zeros depend on the degree. जितनी डिग्री होगी उतने zeros होंगे. But हम mention क्या करेंगे? At least. And here also the important concept, listen here, it is given at last. A 0 of polynomial need not to be 0. 0 जो polynomial का जरूरी नहीं कि 0 ही numeral हो. 0 may be the 0 of polynomial. Every linear polynomial has one and only one 0. 1. A polynomial can have more than 1 0. एक से ज़्यादा भी हो सकता है. So this exercise based on this concept. Now student, come to the next page. Very important concept. Listen here. Remainder theorem and factor theorem. Suppose there is a polynomial 2x square minus x plus 1. इसको हम divide करते हैं. If we divide by x minus 2. If you get the remainder here, अगर ये remainder 3 मिलता है, it means you calculated the remainder by dividing this. Remainder theorem apply किया. ये हमने इसको divide किया. We got the remainder here.
So this process means we follow the remainder theorem. So in general, what is the remainder theorem? Px is a polynomial divided by x minus a. Then the remainder is equal to PA. Now what about the factor theorem? Same process will apply here, and if the remainder is 0, then this is called the factor theorem. Example given in this example number 6 I am taking here. This is algebraic expression. This is divided by x plus 2. It's divided by x plus 2 means in place of x we will put here 2 minus 2. See why minus 2? Because the theorem is x minus a, means a we have to take the minus, or we can put directly x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. कोई भी एक्सप्रेशन हो यहाँ उसको 0 पुट करके x is equal to, then we have to put. तो यहाँ पर minus 2 means minus 2 cube plus 3 minus 2 whole square plus 5 into minus 2 plus 6. 18 minus 18, 0. So it means x plus 2 is a factor of this given polynomial. Whether the given is factor or not, and it is a factor, so this process is known as the factor theorem. Now see student, on next page, example 7. This is a very important. This kind of the example you have to find from refresher previous year question paper. These are very important. They're very simple. I made the video on middle term splitting. Watch in my previous videos. Now come to the next page students. इसमें देखिए एग्जाम्पल 10, ध्यान दीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन. सी इट इज़ गिवन वेरी टीरियस, बट इसको हम कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट स्टेप तो फॉलो करेंगे. इट इज़ वेरी इजी. कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक से बड़ा हो डिग्री, तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 प्लस माइनस वी विल पुट हियर टिल इट कम्स 0. तो अभी ये 1 रखने से ही 0 आ गया, P1. 1 रखने से 0 आ गया, तो x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अगर ये x इज इक्वल टू -2 रखने से 0 आता तो x प्लस 2 इसका फैक्टर होता. इस तरह से करना है हमको. नाउ x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर. अब ये प्रोसेस फॉलो करेंगे इसके बाद, क्योंकि यहाँ कॉमन लेने में आपको दिक्कत आ सकती है क्वेश्चंस में. आफ्टर फाइंडिंग द वन ऑफ द 0, देन वी डिवाइड बाय दिस पॉलिनोमियल बाय दिस फैक्टर. ये डिवीज़न इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. लॉन्ग डिवीज़न का मैंने वीडियो बहुत अच्छे से इजीली एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, तो आप ज़रूर देखिएगा. इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है x² प्लस 120 एंड रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 0. नाउ वी विल गेट अ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. ये इन शॉर्ट में प्रोसेस बता रहा हूँ. लॉन्ग डिवीज़न आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है. फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. See, middle term splitting is minus. These are other two factors. In short मैंने इसको बता दिया है. क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी आए तो ऐसे करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे, then this is one factor. These are other two factors. So आंसर क्या हो जाएगा, x minus 1, x minus 12, x minus 10. Now next देखिए, नेक्स्ट पेज पे ये k वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आगे भी आपको काम आएगा. और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. देन नेक्स्ट, ये आइडेंटिटी देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, बट इसमें क्वेश्चन कैसा आता है. ये क्वेश्चन तो सिंपल दिया एक्सपांड, तो यू कैन एक्सपांड इट वेरी इजीली, a² b² c² करके. बट इसमें रिवर्स क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम. रिवर्स मीन्स कैसे, फैक्टराइज दिस वन. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच आइडेंटिटी विल बी फिट ईयर. ये स्क्वायर से तीनों, तो दिस आइडेंटिटी विल बी फिट ईयर. तो ये 3a का स्क्वायर, ये 4b का, और ये 5c का. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर. तो ये फैक्टराइज करके क्वेश्चन आता है, जैसे ये दिया हुआ है, डायरेक्ट इट कैन कम्स फैक्टराइज. नाउ सी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, आइडेंटिटी नंबर 8. ये एक नई इंट्रोड्यूस हुई है 9th क्लास में. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है. क्यूब्स, सम ऑफ द क्यूब्स -3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट. कभी कभी ये वर्बल भी आ जाता है ऐसे, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर -3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू. तो आपको ये लिखना है एक्सपांशन, इसको लर्न करना है. और ये 1 मार्क क्वेश्चन में इस तरह के आते हैं कि इसको वर्बल में दिया है तो आप कंफ्यूज ना हो.
आइडेंटिटी नंबर 8, एक्सपांशन इज वेरी इजी, बट इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने लिख कर रखा है, देखिए ध्यान से। इफ़ यू रिमेंबर द आइडेंटिटी आपको याद है तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन के लिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो यू विल पुट हियर सिंपली RHS x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो पूरा RHS क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देन यू विल गेट x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, 3xyz इधर आ जाएगा। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन टेक हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स, प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे, तो वेरी सिंपल, नाउ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन प्लेस ऑफ x प्लस वाई। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस जेड ईयर, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस 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 3xyz इज इक्वल टू जेड क्यूब। सो फाइनली x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, सी दिस इज माइनस, ये माइनस जेड क्यूब है, इस तरफ आके प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस 3xyz RHS में चला जाएगा। प्रूव्ड, या ये भी आ सकता है प्रूव की जगह पर, इन प्लेस ऑफ प्रूव इट कैन बी आस्क्ड फाइंड द x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। नाउ देखिए इनमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 27 p क्यूब एंड दिस वन, 4th part and 5th part are very very important, and this is also फैक्टराइज, और ये 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13 हमने भी कर ही लिया, यही हमको प्रूव करना था। एंड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, इनको आप जरूर करिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग माइनस 2 क्यूब वाई क्यूब एंड माइनस 3 क्यूब। सपोज ये क्वेश्चन आता है विदाउट क्यूबिंग, इनको क्यूब किए बिना आपको सॉल्व करना है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, तो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं पहले, माइनस 2 प्लस 5 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू, ये 0 आ रहा है, तो वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी नंबर 8, x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। जस्ट नाउ वी प्रूव्ड इट, सो माइनस 2 क्यूब 5 क्यूब एंड माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू, डायरेक्ट आ जाएगा 3, x मीन्स माइनस 2, y मीन्स 5, z मीन्स माइनस 3। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 5 30 90, तो डायरेक्ट विदाउट क्यूबिंग आ गया। ये बड़े नंबर्स के लिए आपको बहुत यूज़फुल है, जब आप बड़े बड़े न्यूमरल लेंगे और बड़ी क्लासेस में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो डायरेक्ट आप ये आइडेंटिटी याद करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड लॉजिकल क्वेश्चंस में आप ये भी कर सकते हैं, नीचे दिए हुए हैं, देखिए स्क्वायर्स है मतलब एरिया है, और वॉल्यूम अगर क्यूब है तो मतलब वॉल्यूम पूछा है, तो उनके फैक्टर्स करने हैं, तो 2 फैक्टर आएंगे, एक लेंथ बताएगा, एक ब्रेथ, इसके आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, 2 फैक्टर्स आएंगे, वन विल इंडिकेट द लेंथ, अदर विल इंडिकेट द ब्रेथ, ये लॉजिकल क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट, अब आप नोटबुक लेके इनको अच्छे से नोट करिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, एसर्शन एंड 1 मार्क क्वेश्चन यहीं से आते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू।